दिया था। चुनाव आयोग का अवमान वो एक वैधानिक संस्था है और प्रधानमंत्री जी का भी, और इसीलिए भाई जगताप के विरुद्ध में मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों के यहाँ शिकायत की है। भाई जगताप के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कांग्रेस के उद्धव ठाकरे सब नेता है चुनाव आयोग को गालियां दे रहे ईवीएम, क्योंकि अभी 4 महीने में महाराष्ट्र में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव होने हैं। पराभव दिख रहा है, इसके लिए अभी से नौटंकी शुरू हो गई है। वो कुछ और दर्शाए गए थे और रातों रात जो है आंकड़े बढ़ गए, जिसका फायदा महायुति को हुआ है और इस तरीके की जीत हासिल कर पाए। वे आंकड़े लगाने के धंधे तो ये मटकाबाज करते थे। एक आंकड़ा देना, शरद पवार ने 2 विधानसभा में आंकड़े दे, चुनाव आयोग ने उनको जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। जो भी कुछ अगर गलत हुआ है तो प्रूफ दो, वरना बहानेबाजी बंद करो। सर, बीते दिनों आप दिल्ली गए थे मालेगांव और वो पैसे इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया था। उस बारे में आप बीते दिनों दिल्ली में थे, क्या कुछ जो है जानकारी अब तक सामने आई है? किन किन एजेंसियों से मुलाकात की और क्या रिप्लाई मिला गया? मालेगांव में 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा वोट जिहाद के लिए आया, यह अब तक जांच एजेंसी के सामने आया है। अभी तक पुलिस, इनकम टैक्स विभाग और ईडी तीनों ने कार्रवाई का प्रारंभ कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में सीबीआई और एनआईए भी इस जांच में जुड़ जाएंगी। ये बहुत बड़ा भारत और इंडिया स्तर का घोटाला है और इसलिए मैंने सभी एजेंसीज को प्रार्थना की है कि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष प्रयत्न होने चाहिए। Sir, yesterday Bhai Jagtap from Congress said election commission is that dog which sit outside PM bungalow. How do you see this? I have written to election commission and also filed a complaint with Mumbai police commissioner. Such type of insult, humiliation of election commission, which is a constitutional body, it can't be tolerated. And that's why the action should be initiated against Bhai Jagtap. Another thing is that the last few days, the Congress, Uddhav Thackeray, everybody is targeting EVM election commission because you can understand they are scared of the local bodies, Mumbai Municipal Corporation election, which are due in March 2025. Opposition is also saying due to EVM that were different, and after 5 p.m. the figure which was shown was different, due to which Mahayuti is winning or Mahayuti has win this election. How do you see this? You know, Sharad Pawar actually gave some figure and immediately election commission not only rebutted but released the facts and figure. So if any candidate have any particular type of incident, they should give in writing along with the evidence. Just if they not, they can't start abusing or blaming election commission. They should retract and accept the defeat. You have been to Delhi, you have talked to some organization, talked to some agency. What was the reply and what was the update till now? Till now, the total hawala and fund in Malegaon has crossed rupees 1,000 crores. Police, Income Tax Department and ED have already initiated action. Police arrested Siraj Mohammed. Income Tax have issued notice to attach the Benami properties and ED has searched 24 places. I have also appealed to CBI and NIA because I fear this fund might have been used in terror, and there are public sector banks also have been used, and I am very much sure, confident
within next few days, this big scam will be exposed. सर, भाई जगताप यांनी काल म्हटलं आहे की इलेक्शन कमिशन तो कुत्रा आहे जो पंतप्रधानांच्या घराच्या बाहेर बसतो. विरोधक अशा प्रकारचे वारंवार बयान देतात, टिप्पणी करतात. आपण कशा प्रकारे बघतायत ते? भाई जगतापला निवडणूक आयोगातला प्रधानमंत्रीचा पाळीव प्राणी कुत्रा म्हटलं भारी पडणार. मी निवडणूक आयोगाकडे आणि मुंबई पोलीस आयुक्ताकडे तक्रार केली आहे. आता प्रकाराने स्थिविगा एक घटनात्मक संस्थेच्या विरोधात दिल्यामुळे भाई जगतापवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. खरं म्हणजे गेले काही दिवस काँग्रेस, उद्धव ठाकरे निवडणूक आयोगाला बदनाम करायचा प्रयत्न करतायत. त्यांना भीती वाटते. 4 महिन्यानंतर मुंबई महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महाराष्ट्रात निवडणुका येणार आहेत. पराभव अटळ आहे म्हणून बहाणेबाजीची नौटंकी आहे. ईव्हीएम मध्ये 5 वाजताचा अगोदर शरद पवारांनी एक चेष्टा करायची चूक केली आहे. निवडणूक आयोगाने त्याला ताबडतोब उत्तर दिलं. शरद पवारची बोलती बंद झाली. पण कुठल्याही उमेदवाराला जर काहीतरी वाटत असेल त्यांनी पुरावे द्यावे. अशा प्रकारची नौटंकी करून निवडणूक आयोगाला बदनाम करण्याची मोहीम हे राहुल गांधीच्या नेतृत्वात सुरू झाली आहे. जनतेने कसं उत्तर दिलं? हा पराभव लव जिहाद आणि वोट जिहादमुळे आहे हे राहुल गांधींनी स्वीकारावं. च्या प्रकरणात मालेगाव वोट जिहाद फंडिंगच्या प्रकरणात आपण दिल्लीला गेला होता. काय नेमकं अपडेट आहे या केसमध्ये आणि कुठल्या एजन्सी आहेत त्या यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह आहे? मालेगाव वोट जिहाद फंडिंग घोटाळा आता 1,000 कोटीपेक्षा मोठा झाला आहे. सिराज अहमदची अटक पोलिसांनी केली. आयकर विभागाने त्याच्या बेनामी प्रॉपर्टीज अटॅच करण्यासाठी त्या नोटिसेस दिल्या आहेत आणि ईडीनी 24 ठिकाणी धाडी घालून आता अहमदाबाद, सुरत, नाशिक, मुंबई, मालेगाव आणि आणखीन काही राज्यात याची चौकशी सुरू केली आहे. काही दिवसात सीबीआय आणि एनआयए पण या चौकशीत जॉईंट होणार असं मला वाटतं. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें.